Hello everyone. Today we'll discuss one of the most important topics in the subject semantics, and that is theories of meaning. As we know, semantics studies the meaning of words, phrases, clauses, and sentences. So here is a question that where do the meanings of words, phrases, clauses, and sentences arise? So, to answer this question, we have several theories that are related to meaning. Or, how do we get the meaning of words? There are different theories of meaning. So, in this lecture, we might not cover these all types of meanings which are related to, or what we call theories of meaning. So we will see that if the lecture does not prolong more than 25 and 30 minutes, so we might discuss ideational theory, the referential theory, and the behaviorist theory. And then in next one or two lectures, we will cover other four types of theories. So let's begin with ideational theory. Ideational theory. So, John Locke, he's the founder of this ideational theory. Who was John Locke? He was a 17th century British thinker, and he believes that the meaning of words come from the idea in our mind. So he believes that meanings reside in our mind. हमारे ज़हन में एक थॉट होता है, एक आइडिया होता है. सो उस आइडिया या उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए फिर हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. सो ही थिंक्स दैट मीनिंग्स रिजाइड इन द माइंड in the form of thought or in the form of ideas. He explained that people use words to express their thought. So हमारे जहन में thought होते हैं, ideas होते हैं. उस thought और ideas को हम एक ड्रेस देते हैं, राइट? मतलब कि एक किस्म की हमारे पास बॉडी होती है. उस बॉडी को कवर करने के लिए या उस बॉडी को एक्सप्रेस करने के लिए हम अल्फाज का सहारा लेते हैं. ठीक है? सो फॉर वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट, सो फॉर कम्युनिकेशन टू वर्क, द लिसनर मस्ट करेक्टली अंडरस्टैंड द स्पीकर्स वर्ड्स बाय मैचिंग देम विद द राइट आइडिया. सो इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस आइडिया या जिस थॉट के लिए जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, सो आप भी उस आइडिया या उस थॉट के लिए वही वर्ड यूज़ करते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जहन में एक आइडिया है, वो है लव, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो है कैट, और वो है डॉग, और वो है हॉर्स. एक आइडिया है हॉर्स. सो उस आइडिया या उस थॉट हॉर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ हॉर्स, HORSE. सो आपको हॉर्स की मीनिंग तब समझ में आएंगी जब आपके जहन में भी हॉर्स के लिए या हॉर्स के आइडिया के लिए यही वर्ड हॉर्स होता है. ठीक है? सो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है that for communication to work, the listener must correctly understand the speaker words by matching them with the right idea. सो जिस आइडिया के लिए जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लिस्टर भी उस आइडिया के लिए वही वर्ड यूज़ करे, तब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा. सो फॉर लॉक, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड is the idea that come to mind when someone understand it. Right? It's again very important. For the Locke, the meaning of a word is the idea. The meaning of a word is idea. For example, the meaning of the word horse is idea. That's in my mind. Or the meaning of the words, excuse me, or, or the meaning of the word flower. That's in my mind. So for the Locke, the meaning of the word is the idea that comes in mind when someone understand it. जब दूसरा बंदा उसको समझ सके, उसी अल्फाज के साथ उसके ज़हन में भी वही आइडिया आ जाए. ठीक है? Now we have example. For example, we have a word apple. When someone says the word apple, the listener thinks of the idea or image of a fruit that is red or green, round and sweet.
if both people share the same idea of the apple, communication is successful. अगर एक स्पीकर होता है, वो वर्ड यूज करता है एप्पल, सो एप्पल के लिए उसके जहन में एक आइडिया है। वो क्या है? वो एक इमेज है ऑफ अ फ्रूट है, दैट इज अ रेड, ग्रीन, राउंड एंड स्वीट। तो अगर लिसनर के जहन में जब वो स्पीकर बोलता है कि एप्पल, और लिसनर के जहन में भी उस किस्म की इमेज एक फ्रूट की बनती है जो रेड होता है या ग्रीन होता है, जो शेप में राउंड होता है, तो फिर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होंगे। अगर नहीं तो फिर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो but if the listener think of something else like a phone brand, so there might be confusion between the meaning of this word. So आप समझ गए होंगे कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। लॉ कहना चाह रहा है कि the meaning of word come from the idea in our mind. हमारे जहन में आइडिया होता है, थॉट होता है। He explained that people use words to express their thoughts, और उस जहन और उस आइडिया या थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। सो मीनिंग जो है ना वो रिजाइड करती है कहाँ पर? हमारे जहन में, हमारे थॉट में। नाउ अनदर एग्जांपल दैट वी हैव, दैट इज लव। For one person, love might mean friendship and kindness, but for another, it might mean romantic feelings. If the two people don't have the same idea of what love means, they might misunderstand each other. So जब स्पीकर जो है ना वो लव या द वर्ड लव यूज करता है, सो लिसनर के जहन में ये दोनों आइडियाज होने चाहिए, देयर इज फ्रेंडशिप और काइंडनेस एंड रोमांटिक फीलिंग। अगर लिसनर के जहन में लव की जो मीनिंग है वो ये होती है फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस, और ये वाली नहीं होती, सो माइट बी के स्पीकर ये कहना चाह रहा है लेकिन लिसनर के जहन में सिर्फ ये है, तो फिर मिसकम्युनिकेशन होंगी और यहाँ पर कंफ्यूजन अराइज होंगी। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव, both the speaker and the listener must have in mind both these ideas that are related to love. So लॉ कहता है कि मीनिंग जो है ना वो कहाँ पर होती है? वो जहन में होती है, और अपने थॉट को या अपने माइंड को या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम अल्फाज का सहारा लेते हैं। तो मीनिंग जो है ना वो अल्फाज में नहीं होती, मीनिंग हमारे जहन में होती है। सिर्फ अपने जहन को या अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि जो वर्ड हम जिस आइडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो लिसनर के जहन में भी उस वर्ड के लिए वही आइडिया होना चाहिए, या लिसनर भी उसी आइडिया के लिए वही वर्ड इस्तेमाल कर ले, तब कम्युनिकेशन वो सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज दिल बी कन्फ्यूजन। See another example, that is cat. If someone says cat, so the listener immediately think of a small animal with fur or whisker and a tail. Communication is successful if both the speaker and the listener have the same mental image of a cat. For example, अगर मैं कहता हूँ कि cat, मेरे जहन में एक थॉट है, आइडिया है, और इस थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, दैट इज कैट। तो आपके जहन में भी जो आइडिया है, आप भी उस एक कैट की जो इमेज है, आप भी उस कैट के लिए वर्ड CAT का इस्तेमाल करते हैं, कैट। लेकिन अगर आपके जहन में एक आइडिया है, एक किस्म का एनिमल है, फॉर एग्जांपल ये एनिमल है आपके जहन में, और इसके लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉग इंस्टेड ऑफ कैट। सो इस जानवर के लिए जो मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि किस किस्म का है, ये है अ स्मॉल एनिमल विद अ फर, whisker and a tail. सो मैं इस एनिमल के लिए कैट यूज कर रहा हूं, और आप इस एनिमल के लिए डॉग का वर्ड यूज करते हैं। सो देन कम्युनिकेशन वॉन्ट बी सक्सेसफुल, क्योंकि स्पीकर जो आइडिया कन्वे करना चाह रहा है जिस वर्ड के थ्रू, सो लिसनर उसी आइडिया के लिए कोई और वर्ड इस्तेमाल करता है। सो ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि दोनों स्पीकर और लिसनर जिस आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए वर्ड सेम होना चाहिए।
Criticism or objection. Imagine that someone's idea of a grass always remind them of a warm weather. For example, मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ग्रास. तो जब भी मैं ग्रास का वर्ड यूज करता हूँ तो मेरे जहन में क्या चीज आता है? वार्म वेदर. नो, फॉर दिस पर्सन ग्रास वुड पार्टली मीन वार्म वेदर. मेरे लिए ग्रास का मतलब क्या है? वार्म वेदर. या वार्म वेदर को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने हमेशा किस वर्ड का सहारा लिया है? ग्रास का सहारा लिया है. बट अनदर पर्सन माइट नॉट थिंक ऑफ वार्म वेदर व्हेन हियरिंग ग्रास. लेकिन दूसरा बंदा जब वो ग्रास के वर्ड को सुनता है तो उसके जहन में वार्म वेदर नहीं आता. Right? If meanings are only in our mind, words like grass could mean different things to different people. So, how can anyone fully understand another person? It's a question. That if meaning are only in our mind, अगर meaning जो है ना वो हमारे जहन में है, words like grass could mean different things to different people. So how can we fully understand another person? It's a big question. So this is a criticism that if meaning are only in our minds, words like grass could mean different things to different people. So how can anyone fully understand another person? So अगर meaning जो है ना वो हमारे mind में होते, जहन में होते, तो फिर एक वर्ड ग्रास की डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट लोगों के लिए होती. सो अगर मैं ग्रास की मीनिंग लेता हूँ वार्म वेदर और आप ग्रास की मीनिंग वार्म वेदर नहीं लेते, राइट? सो देन देयर विल बी कंफ्यूजन एंड ऑल द टाइम देयर विल बी प्रॉब्लम. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विल बी देयर, राइट? सो नाउ think about this. What if someone wrongly connect the word beech, a type of tree, right, with the idea of an elm tree? For that person, does beech mean an elm tree? If yes, how can we say that they are wrong or that they misunderstood the word? Again, there is a problem. See that if someone wrongly connect the word beech, वो गलत तरीके से वर्ड बीच को कनेक्ट करता है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्री, राइट, विद द आइडिया ऑफ एन एल्म ट्री. फॉर दैट पर्सन डज बीच मीन एन एल्म ट्री? नॉट एट ऑल. इफ यस, सो हाउ कैन वी से दैट दे आर रॉन्ग और दे मिसअंडरस्टूड द वर्ड? This example shows that meaning can't be just private thought. Meaning needs to be public. What I infer the meaning of a word, you should also. If I infer one type of meaning from word and you infer another type of meaning from word, so there will be problem, confusion. So meaning should be public rather than private. What is private? If I infer one type of meaning from a word, for example, the word grass मेरे लिए और मीनिंग रखता है और आपके लिए और मीनिंग रखता है, तो ये तो प्राइवेट थॉट्स हो गए ना. सो मीनिंग शुड बी पब्लिक. व्हाट आई थिंक ऑफ द वर्ड ग्रास, यू शुड आल्सो थिंक ऑफ द वर्ड ग्रास. सो समथिंग दैट मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड, शेयर एंड एग्री ऑन. If meaning were only personal, communication would be confusing because everyone might have different idea for the same word. So I hope you got it, that meaning should be public. Meaning should not be something personal, because then everybody will perceive different meaning of the same word. For me, dog means something else. For you, dog means something else. And for someone else, dog means something else. So then that will be type of private meaning, which will create confusion. So we have another theory of meaning that is called behaviorist semantics or behaviorist meaning. B.F. Skinner, an American psychologist, wanted to make the study of a language more scientific. He believed that the meaning of word is connected to behavior. According to Skinner, the meaning of something someone says come from first the situation that made them say it, that is called stimulus, and the reaction their words create, that is called response. So both situation and reaction together, they make
meaning. Right? How? For example, the situation that triggers speech. You feel thirsty, so you say, I need water. Stimulus. This is stimulus. Your feeling of thirst trigger your speech. So meaning comes from where? Meaning comes from situation. Excuse me. Now, meaning the words I need water mean that you are thirsty based on the situation, that is stimulus. Right? So Skinner believes that meaning arises from situation where you use the word. Now, response, how others react to what you say. Example. Now, you tell a friend, can you pass me the salt? Response. Your friend hears you and hands you the salt. Now, the meaning of your request lies in the friend's action, giving you the salt. You say that can you pass me the salt? Your friend, he or she takes action, and he say, here it is. So the meaning of your request lies in the friend's action, giving you the salt. So both stimulus and response together. Example, you are cold, right? That is stimulus. So you say that can you close the window? So can you close the window? The meaning arises from situation. Stimulus. Now you feel cold. You prompt you to speak. Which prompt you to speak? A response, your friend understands your request and shut the window. So this will be response. Meaning, the meaning of your words come from both your feeling cold and your friend's action in response. So sometimes we see that the meaning, it arises from the stimulus, and sometimes from response, and sometimes together. You can see this example once again. You are cold, stimulus. You say, can you close the window? This is stimulus from situation because you're cold. This is situation. You're cold. This is stimulus. And you say, can you close the window? And you feel cold, which prompts you to speak because आपको सर ठंड लग चुकी है, इसलिए आप बोल रहे हैं. सो आप जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो जुमले यूज करते हैं, तो उसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है? सिचुएशंस. आपको ठंड लगती है, आप बोलते हैं. Which prompt you to speak. और रिस्पॉन्स कौन देखता है? आपका दोस्त. So your friend understands your request and shuts the window. So meaning कहाँ आ गई? The meaning of your words come from both your feeling cold and your friend's action in response. So this is called behaviorist approach to meaning. Different reaction to the word fire. According to Skinner's idea, the meaning of a word fire on a particular occasion could include people running or calling for help. एक सिचुएशन में जो है ना, जब लोग फायर का वर्ड सुनते हैं तो वो क्या करते हैं? लोग दौड़ते हैं, कॉलिंग फॉर हेल्प करते हैं. However, not everyone who hears fire. हर कोई जो है ना, वो जब वर्ड फायर का सुनता है तो वो नहीं भागता, वो हेल्प के लिए नहीं बुलाता. Will react the same way. Everybody will not react the same way. For example, a firefighter might stay calm and try to put out the fire. Firefighter वो नहीं दौड़ेगा, वो हेल्प के लिए आवाज़ नहीं बुलाएगा, बल्कि वो फायर को बुझाने की कोशिश करेगा. And a pyromaniac, someone who enjoys fire, pyromaniac, might get excited instead of running. वो आग को enjoy करेगा क्योंकि वो interested है आग को देखने में, वो enjoy करेगा. A person who knows that the speaker is pathological, right? So a person who knows that the speaker is a pathological liar, someone who lies a lot, this is called pathological liar, might ignores the warning. एक बंदा है वो मुसलसल झूठ बोलता है, pathological liar है, वो कहते हैं कि फायर, आप इग्नोर करते हैं. सो स्किनर कहता है कि द वर्ड फायर जो है ना, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मीनिंग अराइव करता है.
या डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग हम अराइज करते हैं किस चीज़ से? द वर्ड फायर से. But here is also a problem. The problem with Skinner's view of meaning is only based on how people react. वो बेस करते हैं how people react. Skinner's idea suggests that meaning of fire would be different for each person. Skinner समझता है कि फायर की मीनिंग जो है ना वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होंगी. For the people who run or call for help, fire would mean danger. उनके लिए फायर का मतलब होता है खतरा. But for the firefighters or pyronomic, a person who or the person who ignores it, the word would have a completely different meaning. So meaning जो है ना वो अराइज होती है सिचुएशन से. एक बंदे के लिए फायर का मतलब एक होता है, दूसरे के लिए फायर का मतलब दूसरा होता है. So this is a problem because it doesn't seem right to say that the word fire means different thing for different people. Even if people react in different ways, the basic meaning of the word should remain the same. So ये criticism है कि लोग जो है ना वो सिर्फ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं जब वो फायर का वर्ड सुनते हैं, लेकिन फायर की मीनिंग जो है ना वो कांस्टेंट है. अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं तो फायर की मीनिंग एक जैसी होंगी, लेकिन स्किनर जो है ना वो लिटरल मीनिंग को अवॉइड करता है और वो सिर्फ सिचुएशनल मीनिंग को फोकस कर. दैट्स वाई वो कहता है कि मीनिंग जो है ना वो हम सिचुएशन से लेते हैं और ये मीनिंग जो है ना वो सिचुएशन में पड़ी होती है. नाउ द लेक्चर विल बी too much lengthy, so we will discuss referential theory in the next lecture. Thank you so much. Please do provide your valuable comment.